online classes. So students, take out your SST book, open the chapter 14, page number 150. Okay, good morning Aryan. Sorry, good afternoon Aryan. Take out your SST book. SST book निकालिए and open the chapter 14, page number 150. Okay. So अभी हम लोग कौन से चैप्टर्स में थे? हम लोग थे चैप्टर 14. First I have to write chapter's name, and chapter's name is the earth and the sky. The earth and this side. Okay, this is our chapter's name. So yesterday, first we will recall our yesterday's lesson. So yesterday what we are done? Yesterday we are learned about the clouds. Okay, कल हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़े थे? कल हम लोग डिस्कस किए थे about CLOUDS. So as Aryan, you know that cloud means बादल. Clouds का मतलब क्या था? Just good afternoon. Yes, meaning of cloud means बादल. Okay. So clouds का मतलब क्या है? बादल. Okay. And where we can see the clouds? Clouds हम लोग कहाँ देखते हैं? Sky में. Okay. Sometimes clouds color is white and sometimes clouds color is dark. So जब ये clouds का कलर डार्क होता है तब क्या होता है? Rain is falling. क्या होता है? Rain is falling. And after the rainfall, the sky look very clear. That time rainbow will be formed. कल हम लोग यही चीज डिस्कस किए थे. And cloud is very floppy. फ्लॉपी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है. एंड समटाइम व्हाट हैपन, वी फील दैट कि हम लोग उसको पास पकड़ पाते. सो टुडेज आवर टॉपिक इज द अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ और लैंडफॉर्म के बारे में. अर्थ और लैंडफॉर्म के बारे में. ओके, आज हम लोग क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? अर्थ और लैंडफॉर्म के बारे में. सी
Today's topic is the earth and its lifespan. The earth and its landform. Okay, so what we are going to learn about today? We are going to learn about earth and its landform. आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, यानी अपने पृथ्वी के बारे में, अपने प्लैनेट के बारे में और उसके लैंडफॉर्म के बारे में. So as we know that if earth में, for example, this is, okay students, for example, this is earth. Wait, okay students. For example, this is earth. So first we have to understand what is this. This is earth. ये क्या है? Earth है. See. So first we have to understand earth have a से यानी 4 parts से 1, 2, 3, 4. So out of 4 parts, so out of 4 parts, ये जो 3 parts है, ये जो 3 parts है, ये जो 3 parts है, it is covered with water. It is covered with water. Okay, and only one part, एक parts में क्या है आपका land. Okay, let me clear you that if this is the earth, if you just take an example, if earth has 4 parts, it means out of 4 parts, 3 parts it's covered with water, only one part has a land. And today we are going to learn about this land and its लैंडफॉर्म. आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड कितना पार्ट्स में बस लैंड है और यही लैंड में सारे लैंडफॉर्म्स आएंगे. मतलब इसका फीचर्स, इसका विशेषताएं, इसका इम्पोर्टेंस कि ये लैंड में क्या क्या चीज हम लोग पाए जाएंगे. माउंटेन्स. सी, अब हम लोग सोचेंगे कि लैंड है तो बस जमीन है. नो, इफ यू कैन गो another state, another place, anywhere, you will not find the same land. आप लोग को एक ही जैसा लैंड नहीं मिलेगा. Somewhere you can find a mountain, somewhere you find the hills, somewhere you find the plains, somewhere you will find the desert. So today वही टॉपिक में हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं लैंड फॉर्म के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, सो सी, first we will discuss about, first हम लोग डिस्कस करेंगे. एवरीवन ओपन द पेज नंबर 115. ओके, आप लोग 115 ओपन कीजिए सो दैट यू कैन ऑल्सो गो बाय लाइन बाय लाइन जाइए कि आप लोग को भी समझ में आए और आप लोग भी कंफ्यूज ना हो. ओके, सो पहले हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में. सो पहले लेट्स सी व्हाट इज अर्थ. पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में. वेट, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज अर्थ. अब हम लोग पढ़ेंगे पहले अर्थ के बारे में. अर्थ. सो फर्स्ट गिव एन एग्जांपल. व्हाट इज अर्थ? कैन एनीवन टेल मी अर्थ क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं अर्थ क्या है? अर्थ इज आवर होम. अर्थ, wait students, maybe there will be electricity issue. Let's wait for 1 minute. 1 मिनट वेट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज गन, लाइट चला गया. 1 मिनट वेट करते हैं.
Students, maybe there is some electricity problem. Let's wait for only 1 minute, okay? Then we will continue our lesson. So everyone open the page number 15, page number 15, 115, 115 आप लोग open कीजिए so that you can understand clearly, because everything will given in your books only. आप सारा चीज़ आपका बुक में ही दिया गया है. Okay, students. The earth is our home. It is made of land and water. Okay. Okay, students. Wait. Okay. Sound. Is there any problem, students? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो प्लीज. इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम प्लीज कंटिन्यू योर क्लासेस. Okay, students. Okay. So पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में. क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? अर्थ के बारे में. ओके. Okay, students, wait for 1 minute, students. And its land form. Okay, so first we have understand what is earth. पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थ क्या है. So simply you can understand earth is our home. अर्थ को अपना घर माना गया है. Why we can so believe that why earth is our home? Because earth is a planet where we can live, and out of 8 planets, Earth is the only one planet where the life is possible, right? So 8 planet में Earth एक ऐसा planet है जहाँ life possible है. Okay, so simply you can understand Earth is our home. Or wait, students. Earth is our home. ये हमारा घर है where we can live in, and it is made of land and water. एक अर्थ क्या चीज से बना है? For example, this is earth. ये अर्थ है. So it is, ये क्या चीज से बनाना है? बना है it is made of land and water. So I already give an example when I will start the lesson. Right? मैंने आपको आगे ही बोल दिया था कि if अर्थ के पास 4 parts है, so out of 4 parts, 3 parts which covered with water, only 1 part there has a land. Okay? And our earth is made of land and water. Means हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो प्लानेट है, लैंड और वाटर के साथ बना हुआ है. और यही लैंड में सारे लैंडफॉर्म्स वगैरह आएंगे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. सी, एयर इज ऑल अराउंड इज. सो इफ दिस इज द अर्थ, इसका जितना भी बाहरी पार्ट्स है, इट्स कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ एयर.
एक मोटा सा हवा का लेयर इसको क्या किया है, कवर करके रखा हुआ है। एंड दैट लेयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ, वो लेयर हमारे अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कि जो भी प्रॉब्लम्स बाहर से अगर अर्थ में एंटर करने का कोशिश करे, दैट लेयर, दिस एयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ, ये एयर जो है, ये लेयर है हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। The different types of natural features on Earth, including the type of land we live in, are called landforms. See, so बोला जा रहा है the different types of natural features. So natural features means हमारे लैंड का इम्पोर्टेंस जो हम लैंड में है, ओके, उसके डिफरेंट फीचर्स है, और इसी में क्या इंक्लूडिंग से वही लैंडफॉर्म में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ इंक्लूड द टाइप्स ऑफ लैंड वी लिव इन आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। सो टाइप्स ऑफ लैंड, लैंडफॉर्म क्या है, सी व्हाट इज लैंडफॉर्म, द टाइप्स ऑफ लैंड। सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज लैंडफॉर्म, द टाइप ऑफ लैंड, द TYPES, types of land where we live in are called landform. See, अब इसमें भी जैसे टाइप्स ऑफ लैंड में क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ लैंड में क्या क्या आता है। See, landform means what? The types of land where we live in are called landform. Landform means types of land. कोई plain land, mountains land, hill land, desert area, वो सब क्या है, land है। वही different types of land जहाँ पर लोग, animals, हर एक चीज रहते हैं, उसको बोलते हैं landform. Okay students? Okay students, wait 1 minute. Okay, again there will be electricity problem, not electricity problem. Okay, what happened? Okay, good morning, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, नो एंजल, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। ओके, बस आप यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडेज lesson. Okay, so as I already told you, what is landform? The different types of land where we can live in are called landform. Okay, the different types of land where we can live, the different types of land where we live in are called landform. So landform का एग्जाम्पल देखेंगे and tomorrow we will discuss about one way. So see, example of landform is, so number 1 ले लेते हैं, please, PLAI and फिर okay students. नंबर 1 में ले लेते हैं प्लेन, नंबर 2 इज माउंटेन, नंबर 3 इज हिल्स, नंबर 4 इज डेजर्ट, नंबर 5 इज प्लेटू, number 6 is valley. See students, so what is landform? The different types of land where we live in are called landform. Different types of land. So ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं, ये लैंड्स में ही हम लोग को पाया जाएगा, जमीन में ही पाया जाएगा, और जो
जो डिफरेंट एक लैंड का फॉर्म, एक लैंड का फॉर्म इस तरीके से आप लोग को दिखाया जाता है, उसी को जो एक लैंड का डिफरेंट डिफरेंट फेसेस है, डिफरेंट डिफरेंट चेहरा है, उसी को लैंडफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट, प्लेटू एंड वैली। एंड फॉर टुडेज class this much only. Tomorrow we are going to discuss about one by one. और हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आज हम लोग पढ़े हैं अपने अर्थ के बारे में, मीन्स आवर प्लानेट अर्थ। सो अर्थ इज आवर होम। अर्थ क्या है? हमारा घर है। एंड अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ क्या चीज से बना है? लैंड और वाटर। ओके, अर्थ क्या चीज से बना है? लैंड एंड वाटर। ओके, एंड हमारे अर्थ के बाहर, फॉर एग्जांपल मैंने उसी समय बोला दिस इज आवर अर्थ, सॉरी, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। अर्थ क्या है? इट्स कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ एयर। थिक लेयर ऑफ एयर से कवर किया गया है, सो दैट ये अर्थ को अच्छा से प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, एंड व्हाट इज लैंडफॉर्म? लैंडफॉर्म क्या है? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। लैंड का डिफरेंट फॉर्म से उसको बोला जाता है लैंडफॉर्म। फॉर एग्जांपल प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट, प्लेटू एंड वैली। एंड इन टुमारो क्लास we have to discuss about what is plain, what is mountain, what is hill, what is desert, what is plateau and what is valley. Okay students, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क है स्टूडेंट्स कि as your SW is read page number 115 and 116. ओके, आप लोग को पेज नंबर 115 and 16 रीडिंग करना है। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट लैंडफॉर्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। योर नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यू बाय योर हिंदी टीचर पूजा मैम। ओके, थैंक यू। नो स्टूडेंट्स, डोंट कॉपी। ओके, आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। You just go through the page number 115 and 116. Tomorrow we will finish this chapter and tomorrow I will give you the copy work. Okay, and for today's HW you have to just go through the page number 115 and 116. Thank you. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। ठीक है, मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। आज का टॉपिक है हमारा, आज का विषय है सही शब्द पर सही शब्द का निशान लगाइए। ठीक है, कुछ शब्द दिया गया है जिसमें जो शब्द सही होगा उस पर हम क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए क्या करना है? सही शब्द पर सही का निशान लगाना है।
देखिए यहाँ पे क्या है, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें हमें देखना है कि इसमें ईश्वर शब्द जो है, अक्षर जो है, कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ईश्वर लिखा हुआ है। पढ़िएगा तो सब लगेगा सही है, लेकिन हमें उसको मात्रा देखना है और अक्षर देखना है कि इसमें ईश्वर का जो मात्रा और अक्षर है वो सही है। ठीक है, तो और ईश्वर ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ईश्वर, इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा नहीं लगी हुई है। और ये देखिए ईश्वर लिखे हम लोग क्या लिखते, ईश्वर, तो ये क्या हुआ हमारा सही हुआ। ठीक है, ये हमारा सही होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कॉपी में भी कर सकते हैं। अब देखिए ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सूरज जो है सही है, जिसपे हम सही का निशाना लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा सूरज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सूरज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सी मात्रा लगा हुआ है, छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा नीचे से गोल, बड़ी ऊ की मात्रा ऊपर से गोल। ठीक है, इसमें ऊपर से गोल है और इसमें नीचे से गोल है। और यहाँ पे रेफ की मात्रा लगा हुआ है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे तो मुझे मिल गया कि ये नहीं होगा सूरज, ये और ये दोनों में से ही कोई एक होगा। तो आप बताइए फर्स्ट वाला सही है या सेकेंड वाला या थर्ड वाला। ठीक है, बी नहीं होगा, गलत है। जैस अच्छा, पहले वाला बता रहे हो, पहले वाला में तो बी सही है। ख नंबर में बताओ, ख नंबर में किस पे हम सही का मार्क लगाएंगे, जो सही का जो निशाना है। इसमें देखो हम पढ़ाए आप लोग को, बड़ी की मात्रा में सूरज जो होता है कौन सी मात्रा लगता है, बड़ी की मात्रा। लेकिन 100 में बड़ी की मात्रा लगता है, तो यहाँ पे हम ये सूरज को सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब गौण नंबर में आते हैं। गौर नंबर में बताइए, हंसना जो शब्द है वो कौन सा सही है, जिसपे हम सही का निशान लगाएं। गौर नंबर में देखिए, गौर नंबर में देखिए, हंसना कौन सा सही है, जिसपे हम सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हंसना चंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ 100 में है, ये गलत होगा, क्योंकि 100 में नहीं, जब भी हम चंद्र बिंदु लाएगा वो 100 में ही रहेगा। तो यहाँ पे तो अंक की मात्रा जो कि ये गलत है, और यहाँ 100 में चंद्र बिंदु की मात्रा है जो कि गलत है। तो हमें इस पे
पे हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सही सा ऊपर सही का निशान लगाइए। ईश्वर, इसमें हमने 2 नंबर वाले पे क्या किए हैं, सही का निशान लगाए हैं। ये दोनों क्या है, गलत है। इसमें हमें हम लोग पहला जो सूरज है उस पे हम सही का निशान लगाए हैं, जो कि हमारा सही है। ये दोनों क्या है, गलत है। अब इसमें देखिए हंसना अन की मात्रा नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन ये सही है और ये हमारा गलत है। अब चलिए समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। हमने क्या पढ़ा था पहले, अनेक और अनेक, मतलब एक और अनेक। एक को हम क्या कह सकते केला, तो बहुत सारे जब केला रहेगा, जैसे 2 से अधिक केला रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, केले। ठीक है, अब जैसे कि लड़का, तो बहुत सारे लड़के होंगे तो क्या लिखते थे, लड़के। तो क्या था, एक से अनेक। और आज हम लोग पढ़ेंगे समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। देखिए इसको क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। वरदान, वरदान का मतलब क्या होता है, वरदान का मतलब होता है, वरदान का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है, वरदान का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है, तो वरदान को किससे मिलाएंगे, आशीर्वाद से। ठीक है, वरदान, वरदान दीजिए, तो उसका मतलब क्या होता है, आशीर्वाद दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सदैव, सदैव लिखा हुआ है। सदैव मतलब क्या होता है, हमेशा, सदा। मतलब कोई बोलता है ना सदैव हम तुम्हारे साथ रहेंगे, इसका मतलब हम जब रामायण, आप लोग रामायण पढ़ देखिएगा ना,
प्रयोग होता है। अब जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ सदैव, सदैव मतलब हमेशा तुम्हारे साथ, हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे या सदैव तुम्हारे पक्ष हम रहेंगे। तो सदैव का मतलब होता है हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सदैव का मतलब हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भांति लिखा हुआ है, भांति का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो भांति का मतलब क्या है, यहाँ पे भांति है, फिर चांद है, फिर ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए भगवान लिखा हुआ है, ईश्वर का मतलब क्या होगा? भगवान। यहाँ पे ईश्वर को हम क्या किससे मिलाएंगे? भगवान से मिलाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चांद, चांद का क्या होगा? चंद्रमा, चांद का चंद्रमा। चांद को हम किससे मिलाएंगे? चंद्रमा से। भांति का मतलब तरफ, भांति का क्या हो जाएगा? तरफ, ठीक है। इसका ये वही शब्द है, पर हम लोग ये शब्द बहुत कम यूज करते हैं, ये शब्द हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। हमारी जो दादी है, दादाजी है, वो लोग के पास जब आप बैठिएगा ना, ये सब वर्ड कभी कभी हम लोग सुनने को मिलता है, ठीक है। वरदान, वरदान का मतलब होता है आशीर्वाद। सदैव, सदैव का मतलब हमेशा। भांति, भांति का मतलब तरफ। चांद का मतलब होता है चंद्रमा, और ईश्वर का मतलब होता है तरफ, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चंद्रमा, वेरी गुड। एंजल, भगवान, वेरी गुड। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, और ये याद करने वाली चीजें आपको इसको याद कर सकते हैं। वरदान का मतलब होता है आशीर्वाद, सदैव का मतलब हमेशा, भांति का मतलब तरफ, चांद का मतलब चंद्रमा, और ईश्वर का मतलब भगवान, ठीक है। सही शब्द पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जो कि 3 तरह का हमने क्या किया, उसमें लिखा हुआ, उसमें हमें सही शब्द ढूंढना है। जैसे कि ईश्वर, तो आप ईश्वर कैसे लिखेंगे? तो ई में बड़ी की मात्रा आधा स वर ईश्वर, ये हमारा सही है। तो हमने क्या किया, इनके सामने हमने सही का निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए ख नंबर, ख नंबर में मुझे क्या देखना है, सूरज। तो यहाँ पे देखिए स में बड़ी की मात्रा र ज, सूरज, और यहाँ पे है स में छोटी की मात्रा र ज, जो कि गलत है। तो देखिए हमने गलत का निशान लगाया है। और यहाँ पे सु ज में ऋ की मात्रा है, जो कि क्या होगा, गलत है। तो हमने यहाँ पे गलत का निशान लगाया है। और यहाँ पे देखिए हमें 100 में कभी भी सूरज बड़ी की मात्रा में आते हैं, इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि जब भी हम मात्रा याद करेंगे तो जो उसमें मात्रा लगा रहता है उस मात्रा को बोल के हम याद करेंगे। जैसे कि 100 में बड़ी की मात्रा र ज, सूरज, तो हमें क्या याद रहेगा कि बड़ी की मात्रा में सूरज आता है। जैसे कि बड़ी की मात्रा में हम क्या करते हैं, सूरज को लिख सकते हैं, किसी के सामने हम बोल सकते हैं कि सूरज बड़ी की मात्रा में हम सूरज को लिखते हैं। 100 में बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सूरज। तो देखिए हमने सूरज के सामने यहाँ पे सही का निशान लगाया है। अब यहाँ देखिए ग नंबर में क्या देखना है, हंसना, हंसना देखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह का हमने हंसना लिखा है, और इसमें से हमें क्या चुनना है, सही, सही चुनना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ अन की मात्रा लगाया जो कि गलत है, तो हमने यहाँ गलत का निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए हंसना, तो यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु है और क्या है, शौना, जो कि हमारा सही है, तो हमने यहाँ सही का निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए में चंद्र बिंदु जो कि गलत है, तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए समान अर्थ वाले शब्द को मिलाइए, समान अर्थ वाले शब्द को मिलाइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है वरदान, सदैव, भांति, चांद, ईश्वर।
देखिए वरदान, वरदान का मतलब होता है आशीर्वाद। तो हमने क्या किया है, वरदान आशीर्वाद से मिलाया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सदैव। सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो हमने सदैव को क्या किया है, हमेशा से मिलाया है। अब यहाँ पे देखिए चांद, चांद का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। तो हमने चांद को चंद्रमा से मिलाया है। ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है, भगवान। तो हमने ईश्वर को भगवान से मिलाया है। नोट डाउन करिए आप लोग। आपको इसी को इस डब्ल्यू में क्या करना है, याद करना है। जब क्लास खुलेगा तो हम आपसे ये पूछेंगे वरदान का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना होगा आशीर्वाद। सदैव का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है हमेशा। भांति, भांति का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है तरह। चांद का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है चंद्रमा। ईश्वर का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है भगवान। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार हो जाइए, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, फिर अच्छे से सब्जेक्ट के साथ, अच्छे विषय के साथ मिलेंगे फिर, जो कि आपका कुछ बुक से ही रहेगा। क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पे वरदान का मतलब आशीर्वाद, सदैव का मतलब हमेशा, भांति का मतलब तरह, चांद का मतलब चंद्रमा, ईश्वर का मतलब भगवान। ठीक है, तो आप लोग अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. So take out your computer book. Good afternoon, Jess. How are you, Jess? Okay, so what we were learning? Open page number 42. Good afternoon, Angel. Open page number 42. We were learning draw with tough page, right? क्या कर रहे थे हम? Draw with tough page. Okay, so we will just quickly summarize what we have learned in our yesterday's class. Okay. So yesterday we have learned about tux paint, right? The simple definition of tux paint. So what is tux paint? What is tux paint? Comment down the answer. What is tux paint? Huh? Tux paint क्या है? If anyone knows the answer, just comment below. What is tux paint?
If anyone knows the answer, you can write it down in the comment box. What is Tux Paint? Tux Paint is an app, we know that, but what is the definition of Tux Paint? किस लिए हम यूज करते हैं Tux Paint? हम ड्राइंग कलर्स पेंट करने के लिए यूज करते हैं, राइट? So basically Tux Paint helps us to draw, color and paint picture, है ना? This is what we have learned yesterday, right? And हमने क्या पढ़ा? How to open a Tux Paint, right? How to open a Tux Paint. Tux Paint में अगर आपको पेंट करना है तो आप उसको कैसे ओपन करोगे? Right? First thing you will see an icon, right? जो पेंगुइन है उसका आइकन आपको दिखाई देगा, है ना? मैंने आपको दिखाया भी था पेंगुइन का. As you can see in your book also, पेंगुइन का वहाँ पे क्या दिया है? वहाँ पे पिक्चर दिया गया है, right? So Tux Paint का आइकन में क्या होगा? पेंगुइन का पिक्चर होगा, ठीक है? So whenever you open the computer, पेंगुइन का आपको कंप्यूटर स्क्रीन में क्या दिखाई देगा? पेंगुइन, ठीक है? उसको you have to double click that penguin. ठीक है, आपको वो पेंगुइन के आइकन पे क्या करना है? You have to double click to open Tux Paint. Okay? So when you open the Tux Paint, you can see in page number 41. वहाँ पे आपको ऐसा वाला स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है? वहाँ पे क्या क्या है? Parts of Tux window, right? And हमने क्या पढ़ा था? Parts of Tux window, right? इसके साथ क्या पढ़ा था हमने? Parts of Tux window, right? मैंने यहाँ पे ओपन भी करके दिखाया था आपको कि कैसा दिखाई दे रहा है स्क्रीन, है ना? साइड में क्या होता है? आपका टूल्स होता है, राइट? आपका पेंट टूल, इरेजर टूल, राइट? टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, शेप टूल, ये सब आपका टूल्स के साइड में होते हैं, राइट? एंड दूसरे साइड में क्या था? आपका ब्रशेस, राइट? इस साइड में क्या था? आपका ब्रशेस, राइट? डिपेंडिंग ऑन द टूल्स, आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप कौन सा ब्रश यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग वाज कलर्स, राइट? कलर्स का नीचे क्या दिया गया था? ऑप्शंस, राइट? नीचे जो कलर है वो ऑप्शन दिया गया था एंड वो कलर आप चूज कर सकते हैं कि विच एवर कलर यू वांट, यू कैन चूज इट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो. ओके, सो दोस वर द पार्ट्स ऑफ Tux Paint, ठीक है? पार्ट्स ऑफ Tux Paint में क्या थे? आपने ड्राइंग एरिया पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था? ड्राइंग एरिया. बिग वाइड एरिया जो आपको दिखाई देता था स्क्रीन पे उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग एरिया और कैनवस, राइट? Let me show you again. Are you able to see? आपको दिख रहा है ये पिक्चर? When you open Tux Paint, right? जब आप स्क्रीन पे पेंगुइन के आइकन को डबल क्लिक करके when you open that, ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा, इस टाइप का स्क्रीन खुल जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है? And then okay, so tools जितना था कहाँ पे है? Tools सारे इस साइड पे, right? These are all tools, है ना? ये सब क्या है? Tux Paint का tools है, okay? And इस साइड पे क्या है? These all are brushes. What are these? These are brushes. Okay, आपको you can see
ऑल्सो, आप बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये आपका पेन टूल है, ये आपका स्टैम्प टूल है, यहाँ पे आपका लाइन टूल है, ये आपका शेप टूल है, ये आपका टेक्स्ट टूल है, राइट, ये आपका इरेजर टूल है, ये आपका ओपन टूल है, ठीक है। एंड कलर्स, नीचे ये सब क्या है आपका कलर ऑप्शंस, these are all what color options, okay, these are all color options, so you have to choose color from here, ठीक है। साइड पे आपका टूल्स दिया गया है, लेफ्ट साइड पे आपका ब्रशेस, नीचे क्या दिया है कलर ऑप्शंस। एंड दिस वाइड बिग एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग एरिया और कैनवस, ओके, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग एरिया और कैनवस, जहाँ पे हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग एरिया और कैनवस, ओके, दिस इज द प्लेस वेयर वी ड्रॉ। स्क्रीन पे आपको जो ये बिग स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम अंदर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ से ब्रश, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यू क्लिक ऑन द लाइन टूल, ठीक है, आपने लाइन टूल क्लिक किया, यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐसे आप यू कैन ड्रॉ लाइक दिस टाइप ऑफ लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनाया ऐसे, राइट, ये आपका क्या होगा लाइन विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल यू आर ड्राइंग दिस, राइट, ये आपने बनाया यहाँ पे। अब इसमें आपको कलर फिल करना है, कलर कहाँ से चूज करोगे आप, ये नीचे से, यहाँ से आप क्या करेंगे कलर चूज करेंगे, ठीक है। So this was parts of tux paint, okay, we have learned yesterday. Now today we are going to learn how to open a new file, ठीक है। tux paint में आपने बना लिया, राइट, आपने बना लिया, आपने सेव भी कर लिया, एंड देन उसके बाद आप नया फाइल फिर से कैसे ओपन करोगे इस पे, ठीक है। आपने ये सब ड्राइंग कर लिया, यहाँ पे आपने कलर भी कर दिया, एंड देन यू सेव, राइट, आप ये सेव बटन को क्लिक करके आप यहाँ पर पिक्चर सेव करेंगे, राइट। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में क्या, कि हाउ टू ओपन अ न्यू फाइल, हाउ टू ओपन अ न्यू फाइल, ओके। यू कैन सी इन योर बुक आल्सो, पेज नंबर 42 पे देखिए, कैन यू सी पेज नंबर 42, You can choose any color or picture for your drawing. आप कोई सा भी कलर या फिर कोई सा भी पिक्चर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स। स्टेप नंबर 1 में देखिए, क्लिक ऑन द न्यू आइकन, न्यू आइकन यहाँ पे कहाँ दिया गया है, यहाँ पे जो न्यू बटन दिया गया है, ये फर्स्ट में क्या है, स्टेप 1 यू हैव टू क्लिक दिस, ओके, यू हैव टू क्लिक, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जो न्यू का बटन दिया है वहाँ पे जो न्यू का आइकन है, यहाँ पे जो लिखा है न्यू करके, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्लिक न्यू आइकन, ओके। नाउ द सेकंड स्टेप इज स्क्रॉल अप और डाउन टू सी मोर पिक्चर्स फॉर योर बैकग्राउंड। जब आप न्यू का क्लिक करेंगे तो क्या दिखाई देगा, वहाँ पे इस टाइप का पिक्चर दिखाई देगा, दिस इज योर बैकग्राउंड, एज यू कैन सी इन योर बुक। आप अपने बुक में दिखिए, वहाँ पे दिख रहा है आपको 2 एरो दिया गया है ऊपर और नीचे इस साइड का, राइट, 2 एरो यहाँ पे दिया गया है, राइट, एंड बीच पे आपका कलर्स एंड बैकग्राउंड दिया गया है, राइट, फ्रॉम वेयर यू कैन चूज योर बैकग्राउंड और कलर, ठीक है। सो स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब जब इसको स्क्रॉल करेंगे, हमने माउस पे पढ़ा था कि माउस का जो है वो आपका क्या करेगा, स्क्रॉल करने के लिए हेल्प करेगा, राइट, स्क्रॉल व्हील जो होता है वो आपको स्क्रॉल करने के लिए हेल्प करेगा। सो विद हेल्प ऑफ योर माउस आप इस स्क्रीन को क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ का स्क्रीन, यहाँ पे अंदर का जो भी है बैकग्राउंड वो फिर से नया आएगा, ठीक है। सो वहाँ से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया होता है बैकग्राउंड का, ठीक है। तो वहाँ से आप एक बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने आपका बैकग्राउंड चूज किया, उसके बाद क्या है स्टेप नंबर 4, क्लिक द ओपन आइकन, क्लिक द ओपन आइकन। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप बैकग्राउंड चूज करोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ओपन करके एक आइकन दिया गया है, राइट, दिस इज योर ओपन आइकन, ये क्या है आपका ओपन आइकन है, ठीक है। आप जब ओपन करोगे तो आपका ये स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है, आपका ये स्क्रीन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू ओपन अ न्यू फाइल, ठीक है, नया
अब जब कोई सा फाइल ओपन कर रहे हो टॉक्सपेंट के अंदर, आप ये 3 टूल यूज करके क्या कर सकते हो, खोल सकते हो. फर्स्ट इज न्यू टूल, राइट. फर्स्ट इज क्या है, न्यू टूल. वेट, फर्स्ट इज आपका न्यू बटन. नेक्स्ट इज you have to choose what, picture, right. First you have to choose the background for your picture, right. Second में आप क्या करोगे, picture page आप क्या करोगे, select करोगे, right. And third में आप क्या करोगे, open. थर्ड में कौन सा आइकन क्लिक करोगे आप, open आइकन क्लिक करोगे. जब भी आप open आइकन क्लिक करोगे तो you can see a new drawing page option over there where you can draw again. Okay, so this is how you open a new file. ठीक है. Okay, so basically what we have to do is to start a new file, to start a new drawing, what we have to do, we have to just click on a new icon. Okay, click on new icon. Okay, now come to the next, that is using fill tool. Using fill tool, आप fill tool कब use करोगे. Okay, first one was how to, what is tux paint, right. Second is what, second is how to, जब आप टक्स पेंट पे नया ड्राइंग या फिर नया पेज ओपन करना चाहते हो ड्राइंग का, तो यू हैव टू प्रेस और क्लिक न्यू आइकन. ठीक है, जो आपके टूल्स पे होता है. ठीक है, जो टूल्स पे आपका होता है न्यू, सेव, ठीक है, अनडू, इरेजर, वो सब आपका टूल्स पे आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा. तो जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो तब क्या होगा, आपका नया जो पेज है ड्राइंग पेज वो खुल जाएगा. ठीक है, एंड वहाँ से आप बैकग्राउंड भी यू कैन चूज कौन सा बैकग्राउंड आपको चाहिए. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड का ऑप्शंस दिया गया होता है. सो यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल इट. जब आप स्क्रॉल करेंगे तो पेज क्या होगा, मूव होगा, राइट. मूव होते जाएगा तो नीचे और भी ऑप्शन जो है रहता है वो ऊपर आ जाएगा. फ्रॉम देयर यू कैन चूज द बैकग्राउंड एंड द कलर. ओके, द लास्ट थिंग इज ओपन, राइट. जब आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड आपने चूज किया था उसके साथ आपका नया पेज खुल जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट ड्राइंग. ओके, सो दिस इज हाउ यू ओपन अ न्यू फाइल. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव डन इज what is tux paint, right. First क्या करा था हमने, basically what is tux paint. Number 2, how to start tux paint, right. How to start tux paint. What are parts of tux paint, students? Comment down. If anyone knows the answer, you can just comment down. No, this thing you don't have to write it down in a copy. Okay, ये आपको कॉपी पे लिखना नहीं है. ठीक है. Parts of tux paint. जल्दी आंसर दो, क्या है पार्ट्स ऑफ tux paint. एंड नंबर 4 में हमने क्या करा,
open a new file, right? How to open new file. Right? Jess, Angel, what is the answer? What is tux paint? इसका आंसर क्या होगा? How to open file? Sorry, parts of tux paint का क्या क्या है? Parts of tux paint हमने पढ़ा था कल, right? If you remember. So what are the parts of tux paint? Anyone knows the answer? What are the parts of tux paint? अगर आपको पता है तो you can comment down. Those who know the answer. Parts of tux paint में क्या क्या आएगा? Don't know the answer. Parts of tux paint में क्या क्या आएगा? Tux tool, right? Fill tool, eraser tool, undo tool, save tool, right? क्या क्या आएगा parts of tux paint में? We are doing the revision of this previous chapter and still you don't know the answer. क्या क्या है parts of tux paint में? Tux tool. Tux tool का आएगा remit. Page tool. Right. Fill tool. Save tool. Text tool. Eraser tool. Right? Canvas. Canvas मतलब canvas को क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग एरिया बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? कैनवस को हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया. ओके, कैनवस को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग एरिया. शेप टूल भी है वहाँ पे, राइट? शेप टूल, कलर टूल और भी बहुत सारा है वहाँ पे ऑप्शंस, राइट? ब्रश, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट. ये सब क्या है? टक्स पेंट का पार्ट्स है. यस, एंजल. सेव टूल, पेज टूल, फील टूल. फील का स्पेलिंग FILL फील, PHIL नहीं होगा, FILL फील होगा. ठीक है, स्पेलिंग क्या होगा? फील, FILL फील. Yes, good, Angel. This thing you don't have to write it down in your copy, okay? This is just for your revision. Okay, we are just doing a revision of a previous chapter. ठीक है, ये आपने लिखा है कॉपी पे, right? Just do the revision of what we have learned in our previous class. ठीक है, आपको क्या करना है? बस रिविजन करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है. अच्छे से ध्यान से सुनना है और भी अच्छे से समझना है. ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तब आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर्स अच्छे से दे पाएंगे, राइट? जब आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका, और भी अच्छे से आप कर पाएंगे आंसर्स. कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका क्या लिख पाओगे आप? आंसर लिख पाओगे. ठीक है, okay, so with this we have come to the end of our today's class. Okay, this is all for today's class. Today we have learned how to open a new file, right? So tomorrow we will continue the same with tux paint only. Tomorrow we will learn how to use the fill tool. Okay, how to use a fill tool. Okay, so this is all for today. I hope you all have understood well about tux paint. Okay, so thank you everyone. Get ready for your math class. Okay. Good afternoon, dear students. Now this is the math class of class 1. We get with your registered copy. Math.
So as we were doing multiplication in our last class, we will do some exercises related to multiplication here as well. Today also we will do some exercises related to multiplication. Alright, so as I told you in my previous class that what is multiplication? I gave you a simple example of multiplication and we had started with some exercises related to it. So today also we will do some exercises related to multiplication. Alright, so the first question is 34 into 2. So, we will solve this together. You can write the answer in the comment section. So first what we are going to do, we are going to put the case value. Ones and tens. Alright? As we all know, first in addition, subtraction or multiplication, whatever the topic is, the first thing which we have to deal with is the ones case. First we will solve ones case. Right? So ones case, what is a ones case? For this question we have 2 and 4. Right? We have 2 and 4. So we have to do the multiplication. So 2 into 4. What is the answer for this? Comment it down. What will be the answer? 2 into 4 is how much? Two times 4 is, what will be the question over here? Very good. 2 times 4 is 8. So, our answer will be 8. 4 are 8. So, here, this 8 is in single digit. So, we don't have to carry it over. Alright. When the digit is single, we can write it in ones place as it is. And 2 times 3 is how much? 2 times 3 is how much? Please leave it in comment. 6. Very good. So when we multiply 34 by 2, we get 68. Alright? This is how we do the multiplication. So the next question is 26 into 3. The next question is exercise copy and tell me the answer. First we have to solve this and then we will solve it with 2. Alright, first we have to solve with 3
In ones place, we cannot write 18 like this. Can we write 18 over here? No. Why? Because 18 is a double digit number. Right? So, we cannot write 18 over here. So, what will we do is, we will do the base value of 18. Base value of 18. 18 is base value of 18 will be 1, 10 and 8 ones. Right? So on tens place what we got? 18 ones and tens. So on ones place how much we got? We got 8. So we will write 8 over here. And this one, the 1 is going to be carried over here. Plus 1. Alright? So this is how we will do the multiplication. 3 6 are 18. So 18 will carry over 1 here on tens place and we wrote 8 over here. So now we have to multiply. Now we have to multiply 3 into 2 and we have to plus add the 1 with what we get over here. So 3 2s are 3 ones are 3, 3 2s are 6. We got 6 over here and multiplying 3 and 2 we got 6. But we have to add the 1 over here also. So 6 plus 1 is 7. So when we multiply 26 by 3, we get the answer 78. Alright? This is how we do the multiplication with place value, ones and tens. So let me make it clear to you all once again. We had the question. The question was 26 into 30, 26 into 3. So first we will do the multiplication over here and then we will do it like this. So first we want multiply 3 by 6. So we got 80. The 80 could not be kept altogether in ones place because in one only the single digit number are supposed to be kept, right? So we carried over 1 in tens place and we wrote 8 in ones place. 6 to the 18, we wrote 1 over here and 8 over here. So after that, what did we do? We multiplied 3 with 2. We got 6. 3 times 2 is 6 and we had to add the 1 which we got from 18. Right? So by adding 1 we got 7 and 8. So 26 into 3 is 78. Alright? So the next question for us will be 45 and 2. You all solve this in your exercise copy and tell me the answer. Next question is 45. Multiply by 2. So, do this in a copy, solve the answer and give me your answer in the comment box. I am checking your answers. How will we do this type of multiplication? First add 2 with 5. First do that 2 into 5. 2 into 5. How much will we get? We will get 10. We will get 10. So 10 is a double digit number, so we will do the base value of it. This 1 will go to, this 0 will go to 1's place. And this 1, 10 that will be added on 10's place. So 5 2's are 10. So we did the place value of 10. 10 is 1, 10 and 0 ones. We wrote 0 in 1's place and 1 in 10's place. So now we will do the multiplication with
wrong. So 8 plus 1 is 9. So our answer will be 90. By multiplying 45 by 2, we got 90. So 90 over here is the sum or product. We got by multiplying 45 with 2, we got 90. So 90 is the sum or the product or total we got by multiplying these numbers. Alright, so the next question is 18 and 4. First we will write the place value, ones and tens, and we will write the question. The question we have here is 18 and 4. So what will we do? We will first try to multiply the ones place. So we will multiply 4 with 8. How much will we get? 4 times 8 is how much? Tell me the answer. It is 32. Right? It is 32. But we cannot write 32 in ones place. What we have to do? We have to do the place value of 32. So as I told you, the digit on my right hand side is ones and the digit on my left hand side is tens. So the place value of 32 is 3 tens and 2 ones. So the number in ones place we will keep it in ones place itself. It is 2. So ones place 2 is the ones. So we will write it in ones place. Alright? And this 3 will be carried over to the tens place itself. Plus 3. Alright? So now what we have to do is we will multiply 4 into 1. It is equals to whatever we get, we have to add it with 3 plus 3. So 4 times 1 is 4. So 4 plus 3 is 7, right? So we will write 7 over here. How did we got 7? We multiplied 4 with 1. Whatever the sum or product we got, we added it with 3. Because 3 was carried over with 1 space. Overhead 10. So by multiplying 18 with 4, we got 72. So 72 over here is the sum or say product. Or we can also say it as total. Alright, this is how multiplication is done. Whenever we get two number or two-digit number by multiplying, we will have to divide it in place value. And we have to place the numbers in its own place value and we have to multiply it. In tens place, we cannot forget the number which we have added. Alright? So, our next question will be 27 and 3. Our next question will be 27 and 3. So now you all will tell me the answer for this. 27 and 3. Do this in an exercise copy and tell me what will be the answer over here. And I will write the correct answer which you all give me. So do this in an exercise copy and tell me what will be the answer for this question. First we will have to do the place value. You cannot forget to write the place value over it. Alright. So first add 3 into 7. Whatever number you get, you put it in place value. And you have to multiply 3
3 by 2 and add the number that comes. So you will get the total. So what will be the answer for this? So tell me what will be the answer for this question? 27. When we multiply 27 with 3, how much will we get? Do it in your exercise form. I am waiting for your answers. I am waiting for your answers, students. Try to do it fast. You have all the classes pending as well. I will wait for some more seconds. So first you will do the multiplication with 3, 7, and then 3 with 2, and add the number whatever comes up. So you will get the sum or the product for this number. So till you are doing there, I will do it in the final code itself. So 3 into 7 is 21. Right? So 21, 2 and 1. 7. What will be the answer? I guess someone is doing. So this is how we do the multiplication. First we will multiply the ones place. Only the ones place. 3 sevens are 21. So 2 and 1 21. 3 to the 6 plus 2 8. So 27 into 3 is equals to 81. This is the sum total or product we got by adding these numbers. Alright. So this is how multiplication is done with carryover method itself. So this is all for today's class. We will meet with another topic tomorrow. So you all are requested to do all the divisions on the topic you have been taught on online classes. So now get ready for your English class. Okay, good afternoon everyone. This is your English class. All of you get ready to study with your book and copy also, okay? Okay, now give me a quick reply who were present in the class. Those who are present in the class, give me a quick reply. Okay, good afternoon JS. Only JS in the class. Class is with JS. Okay, let's start, okay?
is and are. Okay, we are using of is and are. So these are our topic. Okay, that we already learned yesterday, right? And they are the day before yesterday also. Now, be ready to give the answer in comment box. Okay, and ask you questions. You have to give me the answer. Okay. Okay, let's start. Now, everyone, look at the board. Okay, take the correct words to fill in the blanks. Okay, take the correct words. Okay, correct word means we are using is and are, right? So, is and are using कहाँ पे किया जाता है ना? ये क्या होता है हमने सब पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, सो अब इसको अब एक्सरसाइज में करना है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. look at the question number 1. I dash brushing my teeth. मैं क्या करती हूँ? मेरा टीथ दांत को मांजती हूँ. ओके, सो I में is the right answer or am is the right answer? Give me the answer. is सही होगा कि आंसर की am सही होगा आंसर? Okay, on the jazz. Okay, सिर्फ क्लास में जैसे और जैसे आंसर दे रहे हैं और बोल नहीं है. So मैंने कल is का, am का और are का कहाँ पे यूज करना है मैंने बताया था, राइट? एक ही नहीं. When there is singular subject, that is she, that is he, that is it. Okay, when there is singular subject he, she, it, and singular noun. Okay, singular noun. Okay, at that time we use is. And am is the only helping verb that which take word I, right? I. Next, are. Are denotes plural. Okay, are denotes plural. So when there is a plural, okay, we, they, okay,
सिंगुलर हो, ओके, सिंगुलर नाउन इट, ही, शी हो तो हम इसका प्रयोग इज में करते हैं। एंड एम when there is only I सब्जेक्ट है जो I के साथ एम लगता है, एम हेल्पिंग वर्ब, ओके। नेक्स्ट आर कौन से लेते हैं, आर एक प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो यू, दे, वी और प्लूरल नाउन में हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो सिंपली आर में हम क्या यूज करने वाले हैं, सो आर इज द ओनली वन सब्जेक्ट दैट टेक व्हिच हेल्पिंग वर्ब, एम, ओके। सो एम इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, शी वे क्या करती है, वो लड़की, गर्ल स्टडी पढ़ती है, मेरे साथ पढ़ती है, ओके। शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे वर्ब तो यहाँ वर्ब देखो क्या है, आर दिया है, इज दिया है। अरे भाई सिंगुलर है, सिंगुलर में सिंगुलर जाएगा, ओके। आर का क्या था, राइट, प्लूरल वर्ब का क्या था, तो आंसर विल बी इज, राइट। Question number 3, we subject that denotes plural, right? We क्या है, एक से ज्यादा है, ओके, एक से ज्यादा है जहाँ पे I भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे बहुत सारा people है, people के साथ मैं भी क्या होती हूँ, शामिल होता हूँ, तो अब क्या बनता है, we यानी कि हम, ओके, यानी कि हम, ओके। सो यहाँ पे जो we है ये प्लूरल है, तो ऑब्वियसली प्लूरल में क्या जाएगा, एम जाएगा, नो एम तो एकदम बिल्कुल नहीं जाएगा। दिस वन विल आंसर वी आर गोइंग बाय ट्रेन से जा रहे हैं। डू यू ऑल अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया सबको, ओके, जस्ट वेरी गुड, ओके, जस्ट वेरी गुड। नेक्स्ट we will move the next page number 55 here. Now question number C is fill in the blanks with is M or R. Okay. So you have to use again is M R. Okay. Hello. My name is Dash. Kanika. I dash 6 years old. Okay. My hair dash black and my eyes dash brown. Okay. My dad dash policeman, right? My mom dash teacher, right? We dash happy family. Okay, so everyone, let's see. Okay, let's go to the sentences. Okay, hello. Look at the first sentence. Hello. यानी कि hello means किसी को introduce कर रहे हो. Okay, जैसे कि आप अपने आप को किसी और से, कि अपने दोस्त से introduce कर रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं सबसे फर्स्ट,
का है, अकेला है कि नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा, अकेला है कि नहीं है, इज एम आर पे यूज करना है। अब देखिए एम तो ऐसा है जिसमें सिर्फ ओनली आई के साथ यूज होता है, राइट। और इसमें क्या बोला था, इज जो है शी के साथ, ओके, ही के साथ, इट के साथ और एक और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में कोई भी हो सकता है, लड़का का नाम, ओके, लड़की का नाम, कोई भी हो सकता है, ओके। सिंगुलर नाउन में यूज होते हैं। और आर ऐसा है जो किसमें यूज होता है, दे, ओके, वी, दे, वी एंड plural noun, right? Plural noun, okay. Okay, they be plural noun. And one that is okay, you. Now our aim ऐसा बन रहा है जो I के साथ यूज होता है, राइट। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला है, हेलो माय नेम दैट कनिका, मेरा नाम कनिका है। तो कनिका क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है, कनिका इज अ सिंगुलर, अकेला है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है यानी कि अकेला है। तो जहाँ पे सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर का ही है टू फॉर्म यूज करेंगे ना। आंसर विल बी माय नेम इज, ओके। आई, अब आई ऐसा नाम सब्जेक्ट है जो क्या लेता है, कौन सा है, कौन लेता है, एम। आई एम 6 years old, मैं 6 साल की हूँ। माय हियर, मेरे बाल, माय हियर, मेरे बाल। क्या यहाँ पे एस लगाया है, ओके, यहाँ पे एस नहीं है, सिर्फ बोला गया है कि मेरा हेयर, मेरा बाल। माय हेयर यानी कि एक हेयर, ओके। तो माय हेयर पूरा एक हेयर, मतलब पूरा एक का वो नहीं है, पूरा हेयर को सिंगुलर बोला गया है, ओके। पूरा हेयर को क्या बोला है, अकेला बोला गया है, ठीक है। माय हेयर तो क्या लगेगा, जब कोई अकेला है, कोई नाउन अकेला है तो ऑब्वियसली हम इस लगाएंगे, राइट। माय हेयर इज ब्लैक, ब्लैक है मेरा बाल। एंड माय आईज, देखिए अब ई वाई ई आईज, ए से तो देयर आर हाउ मेनी आईज, ट्वाइस, राइट। तो प्लूरल हुआ, एक से ज्यादा हुआ, सो क्या करेंगे इसमें, माय आईज आर व्हाट, आर ब्राउन, ओके। माय आईज आर ब्राउन। माय आईज प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, माय आईज आर ब्राउन। माय डैड, मेरे पिता, मेरे डैड यानी कि एक पिता ना, ये एक से ज्यादा तो नहीं है, ओनली सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। माय डैड इज अ पुलिसमैन, मेरा डैड पुलिसमैन है। माय मॉम अगेन है सिंगुलर नाउन है, मेरा मॉम इज अ क्या है, टीचर है, ओके। वी, अब देखिए वी आया है, वी यानी कि हम का मतलब होता है एक से ज्यादा, ओके। जब वी आया तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ओके। सो वी आर ऑल हैप्पी डे। अंडरस्टैंड एवरीवन, ये बात सबको समझ में आया। Okay, move to the next. Question number D.
कोई गाना, कोई काम ही है। राइड, उनकी सवारी करना, कोई काम है। ईट, खाना, ये भी काम है। लाफ, हंसना, वर्क है। पैक, यानी कि कोई चीज को पैक करना, राइट, ये कोई काम है। ओके, और इसको एक्शन वर्ड्स को इनटू आईएनजी वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने लगाया था ना, इज प्लस इज एम आर को क्या करना है, इज एम आर को प्लस आईएनजी में हमने कैसे कन्वर्ट किया था, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारे, इज एम आर, राइट, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब के साथ यहाँ पे स्पेशली आईएनजी ऐड करते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारे, इज प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। ओके, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है हमारे इज एम आर। तो हमने कैसे किया था, ओके, अपने मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी जुड़ाया, राइट। जैसे कि कोई यहाँ पे सब्जेक्ट में नाम लिया, नाम इज, जैसे कि मेन वर्ब में प्ले, प्ले मींस खेलना, राइट, नाम इज प्ले, हेल्पिंग वर्ब में इज लिया, ओके, प्ले खेलना, प्ले के साथ हमने ऐड किया था आईएनजी, राइट। प्ले हुआ था ना, प्ले यानी खेल रहा है, कंटिन्यूअसली लगातार खेल रहा है, ये दिखाया था ना। ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, अब आईएनजी ऐड करेंगे इस वाले हमारे एक्शन वर्ड्स में, क्या करेंगे, आईएनजी का ऐड करेंगे। जैसे सिंग है तो एस आई एन जी, सिंग, इसके साथ प्लस आईएनजी, सिंगिंग, राइट। मैंने क्या सिखाया था आपको, जब भी कोई एक्शन वर्ड है जिसमें लास्ट में ई से खत्म हुआ है, राइट, जैसे कि हाइट, राइट, ई से खत्म हुआ हो, तो उसको चेंज करने के लिए आईएनजी जब बनाते हैं, जब आप लोग आईएनजी बना लिखते हो, आर आई डी, ई को नहीं लिखना है, ओके, यू डोंट हैव टू राइट डायरेक्टली, यू हैव टू राइट राइडिंग, एच आई डी आई एन जी, राइडिंग, ई को हटा के यहाँ पे आई आता है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या हुआ, यहाँ पे हम ई को नहीं लिखेंगे, रिपीटेड ई नहीं लिखेंगे, ओके, नहीं लिखेंगे। सो हम क्या लिखेंगे इसको, आर आई एन जी, सवारी करना, ईट का ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, लाफ, एल ए यू जी एच आई एन जी, लाफिंग, एंड पैक, पी ए सी के आई एन जी, पैकिंग। यू हैव टू ऐड आई एन जी एंड विदिन दिस action words. Did you all understand? सारा में सारा सबका कंप्लीट होना चाहिए, ओके, सो I will give you some homework, you have to do by your own, okay? होमवर्क दे रही हूँ सबको, आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ओके।
Okay. So this will be your homework. You have to do in your exercise copy. Okay. Okay, all of you. And so I'm going to end the class right now. Tomorrow we will again meet the new another topic. Okay. So then ready for next class. Okay. Thank you all. Good afternoon, class. Now we'll start our science. Okay. Okay, now we were learning about the egg, है ना? तो हम लोग egg के बारे में पढ़ रहे थे. Good afternoon, Jayash. Okay. Now, अब हमने कल पढ़ा कि what does air do, है ना? Air is everywhere, you know. Air has no color. Air is colorless. Now, how does air help us? Air help us to breathe, है ना? तो इस बार में पढ़ा then you saw we need what do we need air, है ना? We need air to burn things. और कई सारी चीज़ें है ना जो बोर्ड्स होते हैं वो सेल करने में भी विंड की हेल्प लेते हैं हम लोग, है ना? तो मूविंग एयर को विंड इज फॉर द ब्रीज, है ना? ऐसे कई सारे हमने पढ़े. ओके. नाउ वी विल लर्न ओके about what makes air dirty. Okay. Okay, तो हमने एयर के बारे में पढ़ा, है ना? Now we will learn कि अब एयर किस चीज से एयर गंदा होता है. Okay, now what is dirty air? Okay, first we will understand what is dirty air. Okay, now dirty air is full of smoke and dust. Dirty air, it is full of smoke and dust. Okay, जो पूरी तरह से धुआं, ओके, धूल, ओके, डर्ट से भरा हो उसको बोलते हैं हम लोग dirty air. Okay, now dirty air can make us dirty air can make us ill. Okay, गंदा एयर हमें बीमार बना सकता है ना? हमें और क्या दिखा सकता है? कॉफ. एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट खांसी देता है. जितना ज़्यादा गंदा हवा उतना ही हमें खांसी लगता है ना? So dirty air is full of smoke and dust. Okay, and it can make us feel ill and it can give us cough also. Okay. No need to write Jayesh, just understand. Okay, अगर तुमको लिखना है तो make an extra copy वहाँ पे लिखो. Okay, and you just understood what is dirty air and what is making the air dirty. Okay. Now first is things that make air dirty. इसके बारे में हम लोग जानेंगे. Okay. Things that make air dirty. Okay. Now what are the things that make air dirty? Okay. Our first one is smoke from vehicles. We all know
one is smoke from vehicles. Okay, vehicles यानी truck, buses. Okay, vehicles like what? Vehicles like cars, trucks, okay, buses, okay, motorcycles, okay, scooters, okay. तो ये सब चीजें क्या छोड़ते हैं? दे रिलीज स्मोक. बोलो, स्मोक छोड़ते हैं जो कहाँ पे जाता है? दैट स्मोक गोज इनटू द एयर एंड मेक द एयर dirty. Okay. कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर से जो धुआं निकलता है ना, जो धुआं निकलता है वो कहाँ पे जाता है? हवा पे जाता है, मिक्स होता है और वो क्या करता है? ज़्यादा धुआं होने की वजह से एयर गंदा होने लगता है. ठीक है. Now, too much smoke can make breathing hard and hurt our lungs. अब too much smoke, अब ज़्यादा smoke हो गया. Too much smoke means क्या होता है? उससे it affects our lungs. फिर it hurts our lungs. और दूसरा क्या है? Makes breathing hard. है ना? ज़्यादा धुआं हो गया हवा में तो हम लोग क्या हो सकता है? हमारे लंग्स हमें सांस लेने में मदद करता है. तो वहाँ पे धुआं जाने की वजह से क्या होता है? हमारे लंग्स को भी तकलीफ होने लगता है. ओके ओके. और हमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है. ओके. यस, दिस इज द लास्ट क्लास. ओके. नाउ number 2 is smoke from factories. Okay, smoke from factories. Okay, तुम लोगों ने फैक्ट्री देखा है यहाँ पे बड़े बड़े डार्क ब्राउन कलर के जहाँ पे ईंट बनते हैं वो फैक्ट्रीज. ओके, वो भी एक छोटा सा फैक्ट्री है. बट इन सिटीज व्हेन यू सी बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ओके, वहाँ पे चीज़ें तो बन रही है लेकिन क्या निकल रहा है? धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है ना. तो वो दैट चिमनीज. ओके, आई थिंक यहाँ मोस्टली इस टाइप का होता है. ओके, तो ये चिमनी जैसा होता है. यहाँ से क्या निकलता है? स्मोक. ओके ओके. Understood? Okay. Suppose this is the factory. Okay. यहाँ से चिमनी से, okay, चिमनी से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है. Okay, चिमनी से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है. So the tall chimney send smoke into sky and makes it dirty. Okay, now the tall chimneys, okay, send smoke into the sky and make air dirty. Okay, so this is what the factory smoke do. Okay, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो चिमनी से निकलते हुए हवा में जाता है, मिक्स करता है और एयर को गंदा बनाता है. ठीक है. Now, okay, now number 3 is we have, okay, okay, number 3 we have burning garbage. By burning garbage, okay, हम कचरा जलाने से भी
गंदा होने लगता है। ओके, नाउ बर्निंग गार्बेज लाइक लीव्स हो गए, सूखे पत्ते है ना, प्लास्टिक्स, ओके, पेपर्स, ओके, ये सब चीजें जला के भी क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। दे गिव आउट स्मोक, ओके, दे गिव आउट a smoke, okay, understood? They give out very thick smoke, okay, or burning garbage, this thick smoke makes the air dirty. Now this thick smoke makes the air dirty, okay, understood? And the last one we have is the dust and dirt, okay. Number 4 we have is the dust and okay, the dust and dirt, okay. Now dust and dirt, अब ये dust and dirt क्या करते हैं? Now first the dust comes from road, है ना? Dust comes from road, okay. And दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्ड, मतलब कहीं पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्रेन्स चल रहे हैं ना, इधर उधर काम चल रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं वहाँ से, ओके. एंड ड्राई सॉइल, वहाँ से, ओके. डस्ट और क्या आता है, डर्ट, गंदगी और धूल आता है, ओके. ड्राई सॉइल, it makes our dry soil makes our eyes hurt, okay, आंखों को तकलीफ देता है, it itches nose, okay, नाक में खुजली होने लगता है, धूल चला जाता है, इसलिए हम लोग स्नीज करते हैं, है ना. एंड throat start to feel dry, okay. डस्ट और डर्ट की वजह से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, सबसे पहले डस्ट कहाँ से आ रहा है, रोड से, ओके, रोड से आता है. उसके बाद जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पे कुछ घर बन रहा हो या फिर रोड बन रहा हो, कुछ और बन रहा हो, ओके. और ड्राई से, सूखी मिट्टी से, ओके. इसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारे आंखों में दर्द होता है. फर्स्ट इट हर्ट्स आवर आईज, उसके बाद नोज में धूल चला जाता है, इसकी वजह से हम लोग बहुत स्नीज करते हैं ना, है ना, छींकते हैं इसकी वजह से. सो देन नेक्स्ट इज योर थ्रोट, ये गले में क्या होने लगता है, ड्राई, गला सूखने लगता है, ओके, डस्ट और डर्ट की वजह से. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट मेक्स द एयर डर्टी, ओके. फर्स्ट में क्या है, डर्टी एयर, है ना. तो फर्स्ट में इज स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, है ना. सो इन व्हीकल्स में क्या होता है, जब व्हीकल आया, कार, ट्रक्स, बसेस, ओके, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कोई सा भी व्हीकल, ओके, स्पेशली द बिग व्हीकल जैसे कार, ट्रक्स, बसेस. The bigger the vehicle, the more the smoke they produce. Okay. Then too much smoke, ज़्यादा smoke होने की वजह से क्या होता है, हमारे lungs को affect होता है. हमारे lungs जो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है, जो सांस लेने में हमें हेल्प कर रहा है, वो उसको दर्द होने लगता है. और वो अगर लंग्स खराब हो गए
Okay, yes, yes, air help us to breathe. Okay, we have to save water. We should not make the air dirty. Okay, now the next point is smoke from factory. कहाँ से आ रहा है? फैक्ट्री से. Okay, कोई सा भी फैक्ट्री हो, दवाई बनाने का फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ का बनाने का फैक्ट्री हो, कहीं से भी चिमनी से, चिमनी. ओके, सिर्फ घरों पे चिमनी नहीं होते हैं, फैक्ट्रीज में भी चिमनी बने होते हैं ताकि वहाँ से क्या निकले, धुआं निकले. ओके, और वो धुआं कहाँ जा रहा है? इट इज़ गोइंग इनटू द एयर और उससे मिक्स होके एयर डर्टी हो रहा है. ओके, नाउ देन बर्निंग गार्बेज. ओके, ओके, बर्निंग गार्बेज. ओके, कचरा जलाने से भी क्या निकल रहा है? हमारे एयर को डर्टी होता है, स्मोक निकल रहा है. ओके, बर्निंग गार्बेज ऑल्सो गिव आउट द थिक स्मोक, और बहुत थिक. ओके, और गार्बेजेस लाइक कैसे? लीव्स, प्लास्टिक, पेपर्स. ओके, दे गिव आउट द थिक स्मोक. ओके, अंडरस्टूड? Now, the last one is क्या है? Dust and dirt, है ना? Okay, now the dust and dirt ये कहाँ से आ रहा है? रोड से आ रहा है ना? रोड से. Then after that, construction के काम से आता है. उसके बाद dry soil. Okay, सूखी मिट्टी से. ओके, इसके बाद उसकी वजह से, ओके, बिकॉज ऑफ दिस इट मेक्स आवर आईज हर्ट, इचेस आवर नोज. ओके, एंड थ्रोट स्टार्ट्स टू फील ड्राई. हमारा गला सूखने लगता है. ओके, सो दीज थिंग्स, वो चीजें होती है डस्ट एंड डॉट, स्पेशली डस्ट एंड डर्ट की वजह से. ओके, धूल और गंदगी की वजह से. ओके, now what are the ways? अब हमने जान लिया कि what are the things that make air dirty. Now what are the ways to keep our air clean? अब हम लोग एयर को कैसे साफ रखेंगे उसके बारे में जानेंगे. okay? First one, ways to keep the air clean. Okay. Number one is plant more trees. Okay. जितना हो सके हमें नए पौधे प्लांट करने चाहिए, छोटे छोटे पौधे. ओके, तुम लोगों ने याद किया होगा. ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, गार्डन्स में हो गया, पार्क में हो गया, है ना, आसपास जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे हमेशा क्लीन एयर होता है. ओके, वहाँ पे उतना ज़्यादा गंदगी नहीं होता है. बट व्हेन यू गो टू सिटीज़, ओके, यू सी कि सबसे ज़्यादा धुआं होता है जब सिटीज़ में, क्योंकि ट्रीज ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना. तो वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज. ओके, बिकॉज प्लांट, ओके, प्लांट्स गिव्स अस फर्स्ट ट्रीज, बिकॉज ऑफ दैट plants give us fresh air. Okay, then it takes in dirty air. Okay, okay, it takes in dirty air and make the place cool. Okay, it makes the place. प्लांटिंग मोर ट्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या कर रहा है? हमें फ्रेश एयर दे रहा है ना, एंड इट इज क्लीनिंग इन द डर्टी एयर. ओके, गंदा एयर जो है, ओके, उसको अंदर लेता है. ओके, गंदा एयर को खुद लेता है और हमें क्या दे रहा है? इट इज गिविंग अस फ्रेश एयर एंड इट इज मेकिंग द प्लेस कूल. ओके, ओके,
में जब हमें गर्मी लगता है तो हम पेड़ की छाँव में ही जाते हैं, है ना। जिस जगह में ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। बट इन शहरों में, इन सिटीज़ व्हेन यू विजिट सिटीज़, है ना, यू फील मोर ह्यूमिड, मोर हॉट, है ना, क्योंकि देयर इज नो ट्रीज देयर। कम पौधे होते हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा जगह में नहीं होते। बट इन गाँव में, है ना, यू सी मेनी ट्रीज, बिकॉज ऑफ दैट द प्लेस इज वेरी कूल। शहर से ज़्यादा गाँव में थोड़ा सा कम क्या होता है, गर्मी होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। ओके, नाउ जयश कुछ भी मत लिखो। ओके, दिस इज योर लास्ट क्लास, अच्छे से सुनो उसके बाद। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज number 2 is we have do not burn garbage, है ना। जिस चीज़ से धुआं ज़्यादा निकलता है उसको हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं, तो कचरे को हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट उससे क्या होता है, बर्निंग garbage, okay, what does it do? Burning garbage, first it smells very bad, okay, it gives a bad smell, okay. After that it makes the air dirty, है ना, it makes air dirty, okay, it makes the air dirty, okay. After that, and it makes us cough. Okay, it makes us cough. Okay, by burning garbage. Okay. तुम उसका चिंता मत करो जयेश कि कौन से बिल्डिंग से पढ़ा रहे हो, जस्ट listen here, okay? Okay, do not burn garbage. Okay, burning garbage smells bad. It makes the air dirty. It makes us cough. So these things, so we should not burn the garbage. Okay. Then number 3 we have. Okay. Then number 3 we have use less vehicles. इसका मतलब अगर तुम लोग कहीं शॉर्ट डिस्टेंस जा रहे हो या कहीं नज़दीक जा रहे हो तो यू कैन गो बाई फुट और बाई यूजिंग बाईसाइकिल, है ना। ओके, और इफ यू आर गोइंग वेरी फार, अगर दूर जा रहे हो तो देन यू कैन यूज द व्हीकल्स। और इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, कहीं नज़दीक में ही जाना है, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, देन यू कैन गो बाई यू कैन गो बाई फुट, ओके, चल के जा सकते हो या फिर साइकिल से जा सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? ओके, then after that number 4 is keep surroundings clean. Keeping your surroundings clean. आसपास जितना साफ होगा उतना ही हमारा एयर भी गंदा नहीं होगा, especially our homes, our neighborhood, our school. Okay, we have to keep our surroundings clean. Okay. ओके, ये चैप्टर भी आएगा, ओके, जयेश, ये चैप्टर भी एग्जाम में आएगा, तो यही तुम प्रैक्टिस करो। ओके, अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दैट, ओके, दीज आर सम पॉइंट्स, ओके, दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज, है ना। तुम लोग भी क्या कर सकते हैं, यू कैन प्लांट अ ट्री, ओके, उसको वाटर कर सकते हो, है ना। 1-2 पौधे तुम लोग अपने गार्डन में लगा सकते हो, नंबर, क्योंकि प्लांट्स क्या ले रहे हैं, फर्स्ट इज फ्रेश एयर, एंड आफ्टर दैट इज टेकिंग इन डर्टी एयर, मतलब वो अपने से डर्टी एयर ले रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, फ्रेश एयर। ओके, एंड इट मेक्स द प्लेस, वो अपने जो हम प्लेस को ठंडा रखते हैं, ओके, गर्मी नहीं बनाता है। देन आफ्टर दैट डू नॉट बर्न गार्बेज, डू नॉट
because burning garbage gives out what? Smoke. ठीक है? Understand? And burning garbage smells very bad because of that. Okay, तुम लोग धुआं का स्मेल सुनना है ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? खांसी आ जाता है ना? So it makes our air dirty. एक तो हमारा एयर गंदा करता है ना? एक हमें खांसी दे देता है. खांसी ऑटोमेटिकली हमें खांसी आ जाता है ना? धुएं के सामने जाते ही, पास जाते ही. So ये हमें नहीं करना है. And number 3 is using less vehicles. Less vehicles मतलब अगर कहीं नज़दीक जाना हो, ज़्यादा दूर नहीं जाना हो, तो हम लोग पैदल जा सकते हैं या फिर हम लोग साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो अगर कहीं दूर, if it is very far away, then we can go in the vehicle. But if it is in a short distance, you can go by foot or you can take the bicycle. ठीक है? Okay, the small things, now small things children can do. आप लोग भी एयर को क्लीन करने के लिए क्या क्या रख सकते हैं? फर्स्ट इज प्लांटिंग अ सैपलिंग. सैपलिंग का मतलब होता है प्लांट का पौधा, छोटा वाला बेबी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? सैपलिंग बोलते हैं. वो हम प्लांट कर सकते हैं गार्डन में या फिर एक छोटे से पॉट में. ओके, एंड देन वाटरिंग प्लांट्स. हर दिन आप लोग अगर घर में फूल वगैरह है, यू कैन वाटर द प्लांट्स. ओके, इसको पानी डाल सकते हैं. कीपिंग योर रूम क्लीन, है ना? अपना रूम साफ करना डेली. ओके, छोटी छोटी चीज़ों में. ओके, यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स. ओके, छोटी छोटी चीज़ें साफ रखना. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर पेड़ पौधे को हमें ज़्यादा काटना नहीं है, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं हुए तो हमें क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होगा, है ना? इन सिटीज़ तुम लोग बड़े शहर में जाते तुम लोगों को ऑटोमेटिक पता चलता है कि गर्मी ज़्यादा हो रहा है ना? सांस लेने में कभी कभार तकलीफ होता है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो, गाड़ी का हॉर्न चल रहा है ना? गाड़ी से धुआं निकल रहा है, ट्रैफिक्स हो रहे हैं कि. लेकिन हमारे ऐसे बस्ती एरियाज़ में, है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हरे भरे हैं इधर उधर. उसकी वजह से हम अच्छे से सांस ले रहे हैं. ओके, सो वी हैव टू प्लांट ट्रीज. ऐसा नहीं कि शहर में एक भी पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन क्या होता है गांव से थोड़ा कम होता है क्योंकि सिटीज़ में यू ओनली सी द बिग बिग बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज वगैरह, है ना? सो यू शुड ऑलवेज ट्राई कि हमें हर चीज़ में एयर को गंदा नहीं करना है. ओके, यू कैन प्लांट अ ट्री. ओके, प्लांट कर सकते हो, ज़्यादा गंदगी नहीं कर सकते. कचरा तुम लोग कम इस्तेमाल करो, पेपर्स को फाड़ना बंद करो. ओके, वो सब चीज़ें करने से क्या होगा? हमारा एयर डर्टी नहीं होगा, हम लोग अपने एनवायरनमेंट को साफ रख पाएंगे. ओके, अंडरस्टूड? ओके, अंडरस्टूड. नाउ दिस मच फॉर टुडे. ओके, ये चैप्टर्स हम लोग जितने चैप्टर्स हमने रिविजन किए हैं, ओके, उसको वो लोग एग्जाम्स के लिए भी आएंगे. जस्ट प्रैक्टिस करना. ओके, अगर तुम लोग कॉपीज़ में से, बुक में से रिवाइज करोगे तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ओके, उतना ज़्यादा तुम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है. अभी से तुम लोग याद करो, एग्जाम्स में ईजी होगा. ओके, अंडरस्टूड? एंड ओके, और जो लास्ट चैप्टर है, जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होंगे, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा तब हम करेंगे, है ना? जो भी एक्सरसाइज वगैरह छूटा है वो लोग हम करेंगे. ओके, क्लास में ही करेंगे. बट फॉर नाउ इन ऑनलाइन क्लासेस यू जस्ट रिवाइज द चैप्टर्स विच आई हैव डन. ओके, अंडरस्टूड? यस यस. जयेश के बाद बहुत सारे पेड़ हैं, उसको क्या करना है जयेश? पानी डालना है और चेक करना है. ओके, ओके, एवरीडे पानी डालो, नए प्लांट्स उगाओ. ओके, बी अ गुड बॉय. ओके, अंडरस्टूड? नॉट ओनली जयेश, एवरीवन इन द क्लास 1 जस्ट बी अ गुड boy and a good girl. Okay, now this much for today. Okay, now students, I'll see you next time. Now just revise this and have a nice day. Thank you class.